What if I told you that there is a way to predict a company's future before the headlines and before the hype? In this video, I am breaking down the core principles of fundamental analysis, the exact tools that top investors use to find hidden gems and avoid ticking time bombs in the market. So let's unlock the financial X-ray vision you didn't know you had. Fundamental analysis is all about evaluating a company's true value and not just the stock price. Here, you are digging into a business, its financial health and its future prospects. फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आपको कंपनी के ओनर की तरह सोचना होगा और आपको कंपनी के हर एक बिजनेस डिटेल्स के बारे में जानना होगा, जैसे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टेक्निकली कितने एडवांस्ड है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, उसके अलावा उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विस क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको बहुत बारीकी से समझना होगा. Identify undervalued stocks. Here you have to compare the intrinsic value or the true value of the company with the current market capitalization of the company. For this, you have to use certain valuation ratios like price earnings ratio, price to book ratio, price to cash flow ratio. आप चिंता मत कीजिए, इसी वीडियो में रहिए मेरे साथ, ये सारे रेशियोज आपको बारीकी से समझाऊंगा इस वीडियो में. Second point is avoid bad investments. If a person does thorough fundamental analysis of his stocks, then he will surely avoid certain bad investments like high debt companies or companies with no profits or no cash flows or with bad management. Third point is invest for long term wealth. वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो अपने कुछ स्टॉक्स लास्ट 20 या 30 ईयर्स से भी होल्ड कर रहे हैं. जैसे उनके पोर्टफोलियो में कोको कोला के शेयर्स हैं, जिलेट है, तो वो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो वो लास्ट 20 to 30 ईयर्स से होल्ड कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म में तो शेयर मार्केट का मूवमेंट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और अनप्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखोगे या 20 ईयर्स में देखोगे तो हमेशा शेयर मार्केट ऊपर ही गया है. Have you ever wondered how pro investors spot a winning company before it actually takes off? It actually starts with something that most people ignore: financial statements. But if you stick around, then I will explain to you the importance of analyzing these financial statements if you want to find a good company for investment. So, financial statements, what are they? You can think of them as a company's health report card. By analyzing these financial statements, you can understand the financial stability of a company before investing. You have got three major financial statements: the income statement, balance sheet, and the cash flow statement. Let's break down all three of them one by one. Income statement, it will tell you whether a company is actually making money from its business or not. Revenues, expenses, profits or loss, you will find all of them in the same place. Netflix is having a lot of users, but is it actually profitable? The income statement will reveal all. The balance sheet will tell us what the company owns versus what it owes. The balance sheet is divided into two parts: assets and liabilities. In the asset side, all the things that the company owns is shown, like land and building, furniture and fixture, plant and machinery, cash in hand, cash at bank. Whereas on the liabilities side, all the things that the company owes is shown, like money owed to suppliers, loan amount which is owed to banks. The cash flow statement shows how much cash is moving in and out of a company. A company might be having large amount of revenues on its income statement, but if it's selling most of its goods on credit, then it will have low cash flow on its cash flow statement, which is a bad sign. In future, I'll be bringing out more videos where I will explain these financial statements in detail and how to analyze them. Today, I'm going to discuss about 5 financial ratios which will help you in analyzing financial statements in detail. First up, we have the price earnings ratio or the P ratio. This ratio tells us how much we are paying for every 1 rupees of the company's profit. The formula for calculating price earnings ratio is market capitalization divided by net profit. The net profit figure you can find from the income statement of a company, and the market capitalization figure will fluctuate on a daily basis with fluctuations in its stock price. To learn how to calculate market capitalization, you can watch my previous video. Low price to earnings ratio means that the company is undervalued, whereas a high P ratio means that the company is overvalued. To give you a ballpark figure, generally a P ratio below 15 is considered undervalued, whereas
A P ratio above 20 is considered overvalued. P ratios between 15 to 20 is kind of a gray area. But you should not invest in companies only by looking at the P ratio and a lot of other factors to consider for investing in a company. You should always compare P ratios of companies in the same industry before investing. The return on equity or ROE shows how well a company uses your invested money to generate profits. The ROE is calculated by the formula net income divided by shareholders' equity. Higher figure is always better, but generally it should be on an increasing trend over the last few years. The net income figure you will find from the income statement, and the shareholders' equity figure you can find on the liabilities side of the balance sheet. If you want to find out whether a company is leveraged or not, then this is the ratio for you. It is calculated by dividing total debt divided by shareholders' equity. Both the total debt and the shareholders' equity figure you can find from the liabilities side of the balance sheet. High debt to equity generally means company is more risky during downturns and the company may go bankrupt, whereas lower debt to equity ratio means the company is safe and stable. Companies which are having large capital requirements like real estate companies, infrastructure companies generally have higher debt to equity ratio above, which is normal for them. And companies which are not in very capital intensive industries like IT companies or FMCG companies have a lower debt to equity ratio. So companies which are in lower capital intensive industries should not under any circumstances have debt to equity ratio above 1. Otherwise it's a red flag for that company. The current ratio shows whether a company is able to pay its short-term bills. The current ratio is calculated as current asset divided by current liabilities. The current asset figure you can find on the asset side of the balance sheet, and the current liabilities figure you can find on the liabilities side of the balance sheet. Generally, a current ratio above 1 shows that the company's short-term solvency is good. A competitive advantage is something which makes a company stand out among its competitors. A company with competitive advantage leads to staying power in the market. It is the reason that people pay extra to buy an iPhone or to visit CC Day even when there is a cheaper option nearby. The best companies in the world like Apple, Coca-Cola, Microsoft are not just competing, but they are actually dominating because they know what sets them apart from competitors, and they double down on it. There are basically three main types of competitive advantage for a company. First one is cost leadership. This is all about being the cheapest option in an industry. Like Indigo is a low-cost airline which follows the cost leadership approach in aviation sector. Whereas Maruti Suzuki, which is India's largest car manufacturer, is known for its cost leadership approach in the Indian automobile industry. And in case of car parts also, Maruti Suzuki is the cheapest option. The second source of competitive advantage for a company is differentiation of its product or service. This means offering something unique. Apple is the perfect example of this. It's not only a phone, it's a status symbol. For its unique design and brand loyalty, customers will pay more. The third source of competitive advantage is focus strategy. Instead of trying to please everyone, some companies focus on a niche. Think Rolex, luxury watches for a specific audience. They own that lane. The best companies in the world have more than one competitive advantage. Amazon combines both cost leadership and differentiation. So next time, whenever you think of buying the shares of a company, you should first try to judge the source of its competitive advantage. Intrinsic value is all about calculating a company's true value based upon its fundamentals and not hype. To calculate intrinsic value, you just have to compare the current market capitalization of a company with cold hard numbers like cash flow, earnings, like book value, and growth potential. Think of it like this: if the company is a car, then the intrinsic value is what it's worth under the hood, like its engine, battery, transmission, brake, clutch, headlight, etc. To calculate intrinsic value, one popular method is discounted cash flow. It basically means estimating the future cash that a business will generate and adjusting it for time and risk. This may sound complex to you now, but you can use online calculators or even an Excel sheet to make it simpler for you. किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने के लिए आप redstar.in नाम के वेबसाइट में जाइए। उसके बाद यहाँ पे जो सर्च बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पे आप जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वैसी कंपनी का नाम टाइप कीजिए जिसका आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करना चाहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS,
और TCS में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा लास्ट 10 ईयर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो PE रेशियो कितना है, 26 है। PE रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जितना ये रेशियो कम हो उतना ही अच्छा है, 15 से कम हो तब तो सबसे बेस्ट है। 15 to 20 भी रीजनेबल है, वो ज़्यादा नहीं है। किसी भी रेशियो को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो, उसको आपको कंपेयर करना होगा उसके कंपिटिटर्स के रेशियो के साथ, या उसके लास्ट 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में जो एवरेज रेशियो था उस एवरेज रेशियो के साथ कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पी मीडियन, मतलब ये 5 ईयर्स का रेशियो इतना है 31.27। तो 31 से अभी प्रेजेंटली उसका कम चल रहा है, 26 है, तो ये रीजनेबली ठीक ही है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको ROE रेशियो मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। उसका ROE करेंटली 2025 इस फाइनेंशियल ईयर में है ऑलमोस्ट 53, और लास्ट 10 ईयर्स से अगर आप देखोगे तो 40 से बढ़ के ये 53 ऑलमोस्ट 53% हो गया है। तो उसका ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ये, तो ये एक अच्छा साइन है। यही चीज़ आपको देखना है कि ये लास्ट 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड में है कि नहीं। उसके अलावा आपको यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो भी मिलेगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 0 है, मतलब इस कंपनी ने थोड़ा भी उधार नहीं लिया है बैंक से। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो जितना कम हो अच्छा है। जनरली ये 1 से कम ही होना चाहिए, लेकिन डेप्ट इक्विटी रेशियो जैसे आपको मैंने समझाया था, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जिसमें आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, जनरली 1 से ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, या अगर रियल एस्टेट कंपनी हो, कैपिटल गुड्स कंपनी हो, वो कुछ ऐसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिसमें बहुत सारा कैपिटल चाहिए। तो वैसे इंडस्ट्रीज़ में जनरली डेप्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन ये तो हम TCS का देख रहे हैं फाइनेंशियल, तो TCS तो आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, वो इतना कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है सॉफ्टवेयर। उसके अलावा यहाँ पे आप करंट रेशियो देख सकते हो। करंट रेशियो आपको यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे आप आइए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आप निकाल लीजिए। ये करंट एसेट का दिया हुआ है 2025 में कितना है करंट एसेट, ये सारे 1,23,011। ये आपको कैलकुलेटर मार के देखना होगा। करंट एसेट का फिगर लीजिए, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लूँगा 1,23,011 डिवाइडेड बाय ये करंट लाइबिलिटीज़ का फिगर लीजिए डिनोमिनेटर में, मतलब 53,001, तो ये कितना होगा 2.3। तो वैसे आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए। एक्सेल शीट में इस कंपनी का आप लास्ट 5 ईयर्स का करंट रेशियो निकाल लीजिए, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, ये 5 ईयर्स का एक डाटा निकाल लीजिए। तो उसके बाद ये देखिए कि उसका ट्रेंड कैसा है, लास्ट 5 ईयर्स में ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर करंट रेशियो बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जनरली ये रेशियो आपका 1 to 3 के अंदर होना चाहिए। लेकिन 3 से ज़्यादा हो तो ये दिखाता है कि इस कंपनी के पास बहुत सारे आइडियल एसेट्स हैं, मतलब ये कंपनी अपने एसेट्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही।